Hello students, good morning. Welcome to Essays Online classes. Students, we were reading chapter 3, the story of Fidgety Philip of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topic was exercise C. Answer these questions with reference to the context of chapter 3. The story of Fidgety Philip, which is page number 25. So students, we have solved this exercise C. Answer this question with reference to the context of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook in our last video. And students, today's our topic is rhyme. So we will read today about rhyme and included this topic rhyme. We will solve exercise E, match the rhyming words in column A and B of this chapter 3, which is page number 26 in our English literature book as we said. And after it, student, our next topic is exercise D. So students, after solve this exercise E, we will solve exercise D. We can say that we note down exercise D, answer the following questions of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Let's see that what is rhyme. Okay, so word wonder. Students, look at the page number 26. Okay, word wonder, word means sabd, wonder means structure. Okay, word wonder, it means sabd ashar. Able, table, behave, grave. Okay, able means योग्य, टेबल means मेज, behave means व्यवहार करना, grave means serious. Okay, गंभीर. Notice how these words from the poem rhyme with each other. Okay, it's mean कि आपने notice क्या, ध्यान दे कि कविता के ये शब्द एक दूसरे के साथ कैसे मेल खाते. Okay, notice how these words from the poem rhyme with each other. ध्यान दे कि कविता के शब्द एक दूसरे के साथ कैसे मेल खाते. Okay, so let's see the definition of rhyme. What is rhyme? Rhyme is the repetition of similar sounds in two or more words. In poetry, these words are usually at the end of a line and help create a certain rhythm. These words are also called rhyming words. Okay, so students, rhyme is the repetition of similar sounds in two or more words. It means कि ये जो rhymes होते हैं ना, ओके, राइम मीन होता है स्टूडेंट तुक. ओके, राइम मीन्स तुक. तो राइम इट्स मीन तुक दो या दो से अधिक शब्दों में समान ध्वनियों की पुनरावृत्ति करते हैं. रिपीटिशन मीन्स पुनरावृत्ति. तो राइम या तुक दो या दो से अधिक शब्दों में समान ध्वनियों की पुनरावृत्ति करते हैं. एंड इन पोट्री दीज वर्ड्स आर यूजली एट द एंड ऑफ अ लाइन एंड हेल्प क्रिएट अ सर्टेन राइथम. इट्स मीन कि कविता में ये सब आमतौर पर एक पंक्ति के अंत में होती है और एक निश्चित लय बनाने में मदद करती है. ओके, राइटम इज लय. ओके, दीज वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. ओके, इन शब्दों को राइमिंग वर्ड्स इट्स मीन तुकबंदी शब्द भी कहा जाता है. ओके, तो राइम मीन्स स्टूडेंट होता है तुक, RHYME, एंड राइथम मीन्स RHYTHM मीन्स लय, एंड राइमिंग वर्ड्स मीन्स RHYMINGWORDS. राइमिंग वर्ड्स मीन्स तुकबंदी वाले शब्द. तो स्टूडेंट, द मीन ऑफ दिस लाइन्स आर, ये जो लाइन्स है इनका मीन क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों में समान ध्वनियों की पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं. ओके, कविता में ये शब्द आमतौर पर एक पंक्ति के अंत में होते हैं और एक निश्चित लय बनाने में मदद करते हैं. इन शब्दों को तुकबंदी शब्द इट्स मीन राइमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, कोई भी पोम होती है ना हमारी, तो उसके जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं ना वो हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं. और राइमिंग वर्ड्स होते हैं क्या? जो सेम साउंड रखते हैं. ओके, जैसे टेबल, एबल है ना, सेम साउंड करे. बिहेव, ग्रेव, ओके, लास्ट में ए आ रहा है ना, तो ऐसे वर्ड जो सेम साउंड करते हैं उन्हें बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. और मोस्टली ये क्या होते हैं, किसी भी पोएट्री है, कोई भी कविता है, पोम है, तो उसके लास्ट की लाइन्स में आते हैं. क्लियर? दीज वर्ड्स राइम बिकॉज दे एंड विद द सेम साउंड. ओके, दीज वर्ड्स राइम, ये जो वर्ड्स है ये राइम है. ओके, ये सब तुक वाले शब्द हैं. बिकॉज मीन्स क्योंकि दे एंड विद द सेम साउंड, इट्स मीन क्योंकि ये एक ही ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं. ओके, ये जो वर्ड्स है ना, एबल, टेबल, बिहेव, ग्रेव, ये आपके राइम्स है. इट्स राइम है, इट्स मीन क्या है? तुक वाले शब्द है, तुक है, क्योंकि ये एक ही साउंड से एंड हो रहा है, इनका एक ही ध्वनि से ये समाप्त हो रहे हैं. क्लियर? Let's see exercise E. Okay, and we have finished definition of rhyme, and I hope you must have understood this definition of rhyme with its example. You have no problem in definition of rhyme. Clear? So now we are going to solve exercise E of this chapter 3 in our English literature book as we sister. So look clearly exercise E. Okay, exercise E is match the rhyming words in column A and B. Okay, match means मिलाइए, rhyming words means तुक वाले शब्दों को. ओके, इन मीन्स में कॉलम मीन्स स्तंभ ए एंड बी. मैच द राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम ए एंड बी. इट्स मीन हो गया स्टूडेंट्स कि कॉलम या स्तंभ ए और बी में तुकबंदी वाले शब्द को मिलान करें. ओके, स्तंभ ए और बी में तुकबंदी वाले शब्दों का मिलान करें.
Okay, it's exercise E. So let's see your first number word, which you know column A is beak, B-E-A-K, beak. Okay, and the rhyming word of beak is peak. Okay, rhyming word क्या है beak का? Peak है. Okay, P-E-A-K, peak. So student match first beak to C peak. Okay, beak को peak से match करिए. Okay, with the help of scale, scale का use करके, scale की help से. Okay, draw a straight line, match to beak to peak with use of a scale. Okay, एक scale का use करके. And your second number word is motion, M-O-T-I-O-N, motion. And students, we can see that the rhyme of motion is ocean. Rhyme का motion का rhyme क्या है? Ocean. Okay, so student match second motion to F, ocean. Okay, तो मोशन को ओशन से मैच करिए स्केल का यूज़ करके, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके. एंड स्टूडेंट योर थर्ड नंबर वर्ड इज पडल, P-U-D-D-L-E, पडल. एंड वी कैन सी दैट द राइम ऑफ पडल इज मडल. ओके, M-U-D-D-L-E, मडल. जो आपके फर्स्ट नंबर वर्ड पे राइट है ना, ए नंबर वर्ड है आपका 20 कॉलम का. क्लियर? तो स्टूडेंट मैच 3 पडल टू ए मडल. क्लियर? बिकॉज दीज आर राइमिंग वर्ड्स. द राइम ऑफ पडल इज मडल. क्लियर? Let's see 4 number word. Your 4 number word is note, N-O-T, note. And we can see that the rhyme of note is boat. Okay, so note, boat is rhyming word. Okay, ये rhyming words है. We can to say that the rhyme of note is boat. Note का rhyme क्या है? Boat है. Clear? So match 4 note to be boat. Okay, जो 4 नंबर पे नोट है उसे B नंबर पे जो बोट है उससे मैच करिए. ओके, लेट्स सी 5 नंबर वर्ड. योर 5 नंबर वर्ड इज स्ट्रेंज, S-T-R-N-G, स्ट्रेंज, अजनबी. ओके, तो स्ट्रेंज we can see that the rhyme of strange is range. Strange का rhyme क्या है? Range है. Okay, तो strange and range are our rhyming words. Clear? So strange match strange to range. Okay, match 5 number strange to D number range. Clear? Match करिए. And student your 6 number word, which is last word of this exercise E, is helpful. Okay, सहायक, मददगार. Okay, and we can see that rhymes of helpful is solveful. तो helpful का rhyme क्या student? Solveful है. Okay, तो student match helpful to solveful. We can say that match 6 number helpful to E number solveful. Clear? तो students rhyming words are beak, peak, motion, ocean, puddle, muddle, note, boat, stanch, range, helpful, solveful. Okay, or we can say that the rhyme of beak is peak, the rhyme of motion is ocean, the rhyme of puddle is muddle, the rhyme of note is boat, the rhyme of strange is range, the rhyme of helpful is solveful. Clear? To stand, we have completed exercise E, match the rhyming words in column A and B, and I hope you must have understood this exercise E. You have no problem in this exercise E. Okay, you have clear all rhyming words. Okay, मैं यही आशा करती हूँ आपको एक्सरसाइज ई क्लियर हो गई होगी कि rhyming words क्या है और इनका मैच कैसे करते. क्लियर? So now we are going to solve exercise E. Okay, we have solved exercise E. Now we are going to solve exercise D. Answer the following questions of this chapter in our Fair English Literature notebook. Okay, so let's see. Your exercise D is answer the following questions. Okay, answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित questions means प्रश्नों के. Okay, answer the following questions. It means निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Your first number question is what is the rhyme? Okay, what means क्या? It means है rhyme means tuk. Okay, what is the rhyme? It's mean tuk क्या है? Okay, just in your first number answer is rhyme is the repetition of similar sounds in 2 or more words in poetry. These words are usually at the end of a line and help create a certain rhythm. These words are also called rhyming words. Okay, so students, the meaning of this answer is rhyme is a repetition of similar sound in 2 or more words. It's mean to rhyme है ना, rhyme is tuk. It means है the repetition means पुनरावृत्ति वाला. ओके, ऑफ मीन्स का सिमिलर मीन्स एक जैसे. ओके, वर्ड्स मीन्स सिमिलर मीन्स एक जैसे, साउंड्स मीन्स ध्वनियों के, इन मीन्स में, टू मीन्स दो, और मीन्स या मोर मीन्स अधिक, वर्ड्स मीन्स शब्दों. राइम इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इन दी 2 और मोर वर्ड्स. इट्स मीन कि तुक 2 या 2 से अधिक शब्दों में समान ध्वनियों की पुनरावृत्ति. ओके, एंड इन पोट्री इट्स मीन कविता में दीज वर्ड्स आर यूजली एट द एंड ऑफ अ लाइन. ओके, तो कविता में इस ये जो शब्द है ना, कविता में ये शब्द आमतौर पर एक पंक्ति के अंत में होते हैं. ओके, एंड हेल्प क्रिएट अ सर्टेन राइथम. इट्स मीन और एक निश्चित लय बनाने में मदद करते हैं. क्रिएट मीन्स बनाने में. ओके, अ सर्टेन मीन्स निश्चित. ओके, राइथम मीन्स टुक. ओके, इट्स मीन कि
in poetry, these words are usually at the end of a line and help create a certain rhythm. It's mean कि कविता में ये सब आमतौर पर एक पंक्ति के अंत में होते हैं और एक निश्चित लय बनाने में मदद करते हैं. क्लियर. एंड these words are also called rhyming words. इन वर्ड्स को और क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तुकबंदी वाले शब्द भी बोलते हैं. इन शब्दों को तुकबंदी वाले शब्द बोलते हैं. क्लियर. तो लेट्स एग्जाम्पल. योर फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इज बीक. पीक. ओके. सो स्टूडेंट्स, राइम ऑफ बीक इज पीक. राइम बीक का राइम क्या है? पीक है. ओके. एंड योर सेकेंड नंबर एग्जाम्पल इज मोशन. एंड द राइम्स ऑफ मोशन इज ओशन. तो मोशन का राइम क्या होता है? ओशन. क्लियर. This time we have completed question number first with its answer, and I hope you must have understood question number first. Now we are going to solve second number question of this exercise D. Okay, so let's see. Your question number second is write the rhyming words of given words below. Okay, write means लिखिए. Rhyming words means तुकबंदी वाले शब्द. Okay, same sound वाले words. Of means के, given words means दिए हुए words के, below means नीचे. Okay, your second number question is write the rhyming words of given words below. It's mean नीचे दिए हुए शब्दों के rhyming words write down करिए. नीचे दिए हुए शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द वर्ड्स राइट करो. ओके, जो वर्ड्स दिए ना, ये हमें आपको ये वर्ड्स दिए, तो आपको इन वर्ड्स की ऐसे वर्ड्स राइट डाउन करनी है जिनके जो राइम्स हो. ओके, जो इनके राइमिंग वर्ड हो, इनके राइम्स हो. क्लियर. इनके समान तुक वाले शब्द हो. सो लेट्स सी. योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज पडल. PUDDLE पडल. ओके, योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिव यू फर्स्ट वर्ड पडल. ओके, PUDDLE पडल. एंड स्टूडेंट्स, द राइम्स ऑफ पडल इज मडल. ओके, तो जो पडल का राइम क्या होगा? मडल. MUDDLE. पडल, मडल, सेम साउंड कर रहे हैं ना. तो पडल एंड मडल, इट्स अवर राइमिंग वर्ड. वी कैन से दैट the rhyme of puddle is muddle. Clear. Your second number word is note. NOT, note. And the rhyme of note is boat. BOAT, boat. Okay, तो student, note and boat, your rhyming word. We can say that the rhyme of note is boat. तो rhyme क्या है note का? boat. Clear. So students, let's see third number word. Your third number word is stand. Okay, stand. And the rhymes of stand is range. RNG, range. Okay, so student, we can say that change and range, it's our rhyming words. Or we can say that the rhyme of range is range. Clear. Let's see four number word, which your last word of this exercise D. Okay, of this question second. Okay, included this exercise D. So your next word is helpful. It means सहायक या मददगार. Okay, and students, the rhyme of helpful is solveful. Clear. तो helpful and solveful, it's our rhyming word, and we can say that कि rhyme word of helpful is solveful. जो helpful है उसका rhyme क्या होते हैं? solveful होते हैं. Clear. So student, I have described you all question, all words of this exercise D, and I hope you must have understood. You have no problem in these exercise E and exercise D. Okay, you have understood exercise E and exercise D. मैं ये आशा करती हूँ कि आपको exercise E और exercise D बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस एक्सरसाइज में. क्लियर. This and today's class work is that firstly complete exercise E of this chapter 3, the story of Fidgety Philip, which is page number 26 in your English literature book as we said. And after it, your next word is that complete exercise D. We're going to say that note down exercise D of this chapter 3 in your fair English literature notebook. It's a 2 days class. Okay, and so your homework is that learn exercise E of this chapter 3, the story of Fidgety Philip from your from your English literature book. It's a 2 days homework. Okay, क्वेश्चन आपका क्लास वर्क क्या है कि आपको एक्सरसाइज ई सॉल्व करनी है अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक पे. ओके, पेज नंबर 26 पे चैप्टर 3 है द स्टोरी ऑफ फिडगेटी फिलिप. एंड आफ्टर इट टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ई, योर नेक्स्ट वर्ड इज दैट नोट डाउन एक्सरसाइज डी ऑफ चैप्टर 3 इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. आपको जो एक्सरसाइज डी ना अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे राइट डाउन करनी है एज इट इज. ओके, फर्स्टली मेंशन CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, and then heading exercise the answer the following questions, and last write down this question answer. Clear, with your best handwriting. Clear. तो आपको ऐसे ही अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे एक्सरसाइज डी नोट डाउन करनी है आफ्टर सॉल्विंग एक्सरसाइज ई इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एज वी सेड. क्लियर. तो आपको एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज डी सॉल्व करनी है. एक्सरसाइज ई को अपनी बुक पे सॉल्व करना है, डी को अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे सॉल्व करनी है. आपकी आज का क्लास वर्क है. एंड स्टूडेंट, आपको होमवर्क क्या, आपको एक्सरसाइज ई लर्न करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर बुक से. एज वी सेड जो बुक है ना इंग्लिश की, उससे आपको एक्सरसाइज ई लर्न करनी है. इट्स अ 2 days होमवर्क. ओके, आपका होमवर्क है. सो स्टूडेंट, आई होप you must have understood your class 1 homework. You have no problem in your class 1 homework. Okay, so all students complete your classwork. Firstly, complete exercise E of chapter 3, the story of Fidgety Philip, which is page number 26 in your English literature book as we said. And after it, note down exercise D of chapter 3 in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.